Pakistan needs to shut down terrorism factory, says Foreign Secretary S. Jaishankar. And BCCI selectors name unchanged squad for first two test against Australia. And devotees throng Ganesh temples on the auspicious day of Angarki Sankashti Chaturthi. Thank you, Rukma, and welcome to Metro Scan from Mumbai. I'm Shama Mishra. Let's see the news in detail. Foreign Secretary S. Jaishankar today said that Pakistan needs to shut down terrorism factory, and there is now international concern about it. He also asserted that India has not given up on SAARC, but it will keep looking for other opportunities for regional integration since SAARC is stuck. Speaking on ties with China, Jaishankar said it does not help to duck issues and admitted that there was a need to invest more to manage the relationship better. Jaishankar was speaking during a discussion on political change and economic uncertainties at the Gateway Dialogue event co-hosted by Ministry of External Affairs. He also cautioned against demonizing US President Donald Trump, but instead analyzed him as he represents a thought process. Talking on India's strategic shift, he stated that in the last 2 years there has been a big initiative towards the Gulf, and today we have seen 7 million plus Indians in the Gulf whose remittances are roughly of the order of the IT exports to the United States. The thinking on Pakistan is necessarily security centric because the fact is we can live with a situation of very little trade, but we can't live with a situation of the terrorism tap being turned on and off, which it will be so long as the factory keeps running. So the issue boils down really to whether the Pakistanis are willing to make a fundamental break with habits which they have practiced for so many years. On day one yesterday, Minister of State for External Affairs M.J. Akbar and State Minister, Ministry of Foreign Affairs, Government of Bangladesh, Mohammad Shahryar Alam discussed the importance of strong bilateral relationships between India and Bangladesh and the comprehensive steps that these nations have taken together in the areas of investment, connectivity and the resolution of land and water disputes. Both ministers agreed on terrorism being the biggest threat towards the region's otherwise notable economic progress. Union Minister Ravi Shankar Prasad emphasized the importance of digitization to facilitate an efficient, corruption-free and secure system of governance to India. Speaking exclusively to DD News, he said India's digital economy in 5 to 7 years is going to become a $1 trillion economy. हमारे साथ हैं केंद्रीय मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले आपने ये हेडलाइन दिया है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाली है। कैसे हम अचीव करेंगे आने वाले 5-7 वर्षों में? जैसे बताया, भारत का आईटी बढ़ेगा, ई कॉमर्स काफी बढ़ने वाला है, अभी 30 बिलियन का है, लगभग 150 बिलियन से आगे जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग $400 बिलियन में होने की बताया आपको कि 72 मोबाइल फैक्ट्रियां आई हैं, 11 करोड़ मोबाइल फोन बना है, 200 बाकी कंपनियां आई हैं। उसके बाद डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मैंने बताया, ये नोटबंदी के बाद डिजिटल सर्विसेज जो है वो 1200% बढ़ी है पेमेंट में और वैल्यू टर्म में लगभग 800% बढ़ी है। तो ये सारा कुछ डिजिटल सर्विसेज, ई कॉमर्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, और हिंदुस्तान का दिमाग तो बहुत बढ़िया होता है, आगे और नई नई सेवाएं लगाएंगे, तो ये भारत डिजिटली बहुत आगे बढ़ने वाला है। सर, जब हम बात करते हैं कि हम डिजिटली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम डिजिटल हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के भी थ्रेट्स रहते हैं, इसके लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं? इसके लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं, साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बना रहे हैं, फिर हम लोगों ने सर्टिन को मजबूत किया है, अभी फाइनेंशियल सेवाओं के लिए, बैंकिंग के लिए अलग से सर्टिन बन रहा है, उसके बाद फिर साइबर अवेकनिंग, साइबर ड्रिल, साइबर ट्रेनिंग, साइबर ऑडिटर, ये सब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है
कि साइबर वॉर इज अ ब्लडलेस वॉर, रक्तहीन क्रांति है, तो उसमें पूरी दुनिया को मिलकर साथ काम करना है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया बहुत-बहुत सर। धन्यवाद, बहुत-बहुत तो ये थे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने बताया कि जो डिजिटल इकोनॉमी है हमारी, वो काफी आगे बढ़ने वाली है। साथ ही जो साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं उसको डील करने के लिए भी हम काफी तैयार हैं। कैमरा पर्सन लोकाभी रामन के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। The India Senior Selection Committee met in Mumbai today to pick the squad for the upcoming Australia Test series that begins 23rd February in Pune. The squad is only for the first 2 Test matches. While there was no major surprise in the 16-man squad, the selectors decided to not pick Rohit Sharma, who has been away from cricket since October due to injury. India retained the squad from one off test against Bangladesh, and the likes of Abhinav Mukund, Hardik Pandya and Jayant Yadav are in the squad. The Virat Kohli-led squad also did not see the return of fast bowler Mohammad Shami, who was out of the team since the Mohali test against England. The auspicious day of Angarki Sankashti Chaturthi, dedicated to Lord Ganesha, is being celebrated today. The day is celebrated on the 4th day of Krishna Paksha. Devotees across Ganesha temples are performing pujas and are observing a day-long fast for the revered deity. Devotees were seen thronging at Mumbai's famous Siddhivinayak temple and performed traditional puja. जय देव जय मंगल मूर्ति, तव दर्शन मात्रे हो भक्ति सिद्ध पुरति। जय देव आद्य ब्रह्मादेशा योगी रुद्रामा, करुणा पारवार हे मंगल धामा। मत्सर मुख जनुजारे परिपूजित कामा, स्वामिन विघ्नाधीशा दे निज सुखामा। जय देव जय मंगल मूर्ति। This edition of Metro Scan from Mumbai will be back tomorrow evening with more updates from the commercial capital. It's over to Delhi studios. Thank you for watching. Namaskar. Thank you very much, Sharma. With that, we wind up today's edition of Metro Scan. Thanks for watching. Namaskar.